Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
Hare Krishna. So very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiravet Nashtaprayeshva Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So in our previous session, we discussed, in this chapter, basically we are discussing the prayers of Lord Brahma to the Supreme Lord, and he is seeking mercy of the Supreme Lord because he is an empowered personality. He is empowered to create this world as it was before the temporary dissolution which happens at the end of the day of Lord Brahma. So the state of the universe which was before the temporary dissolution or temporary destruction, Lord Brahma has been entrusted with this responsibility of creating the universe again as it was before. So Lord Brahma knows that this is a very difficult task. It's not easy. And that is why, although he is an empowered personality by the Supreme Lord himself, he is empowered directly by the Supreme Lord, but still, although he is the greatest personality in the universe, but still he is offering his prayers to the Lord and seeking his mercy, because the Lord Brahma, as we have discussed in the previous session, Lord Brahma has been continuously praying to the Lord because he knows that nothing in this world is possible without mercy of the Supreme Lord. So Lord Brahma knows this, and that is why he is continuously seeking the Lord's mercy. So now today we'll start our discussion with text 26, Shloka number 26 of the 9th chapter of the 3rd Canto of Srimad Bhagavatam. Maitreya Uvacha Swasambhavam Nishamyaivam Tapo Vidya Samadhi Yavan Manovacha Stutva Virarama Sakhinnavat. Maitreya Uvacha Swasambhavam Nishamyaivam Tapo Vidya Samadhibhi Yavan Manovacha Stutva Virarama Sakhinnavat. Translation. The sage Maitreya said, O Vidur, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus praying, he became silent, as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration. Now you see. So now Maitreya Rishi, as we know that this discussion is going on between Maitreya Rishi and Mahatma Vidur. So Maitreya Rishi is talking about all the instances which have happened in the past. So now Maitreya Rishi is saying here
Swasambhavam Nishamyaivam. Swasambhavam means, Sambhav means creation. And Swasambhavam means, Swa means Lord Vishnu. So Lord Brahma is born from the navel of Lord Vishnu, as we know. So Swasambhavam Nishamyaivam. Tapah Vidya Samadhi Vivi. Tapasya, austerity, knowledge, and samadhi means complete concentration on the Lord. So, yavan manovachah stutva. So, Lord Brahma, yavan manovachah stutva, with his mind, with his words, with his prayers, he continuously offered his prayers to the Supreme Lord. Viraram sakhinnavat. And then he became silent. So after offering his prayers to the Lord continuously, Lord Brahma completely became silent. So not only Lord Brahma, but all of us, we are eternally related to the Supreme Lord. And we are continuously in relation with him, and the Lord himself, out of his causeless mercy upon all conditioned souls, he has taken his place within every living entity's heart as Paramatma. Not only in the heart of Lord Brahma, but in every living entity's heart, the Lord is present as Paramatma, as the super soul. And if we are advanced, Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, in the 10th chapter, the 10th shloka, Tesham satati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upyanti te. So if a devotee is fortunate, and if a devotee is advanced enough by his devotion, by his loving devotional service, then he can develop relationship with Paramatma, Lord within the heart. And not only that, he can develop relationship with the Lord within the heart, but he can also get transcendental directions from him. And Lord Brahma, that is the cause of enlightenment of Lord Brahma. He is receiving directions from the Lord within the heart because of his advancement in devotional service. So that is why the Supreme Lord Vishnu, Shirodakshai Vishnu, he is called as Chaitya Guru. Lord Shirodakshai Vishnu, he is called as Chaitya Guru. Chaitya Guru means Chaitya Guru means the Lord within the heart, who is always giving us transcendental directions. So that's why he's called as Chaitya Guru, the original spiritual master. And when we are not able to develop our relationship with Chaitya Guru, when we are not able to hear him, then the Chaitya Guru manifests outside as our spiritual master, Guru. So external manifestation of spiritual master and internal presence of Chaitya Guru or the Lord as Paramatma are the same. So the same directions which we'll be getting from the Lord within the heart is externally given by the spiritual master. The direction and instruction of the spiritual master and
The Lord within the heart as Paramatma are same. So Lord Brahma, because he is directly born from the navel of Lord Vishnu, so he does not need an external spiritual master because he is called Swayambhu. You see, the word is used here, Swasambhavam. So he is born from the navel of Lord Vishnu directly. So his spiritual master is directly Lord Vishnu. But for conditioned souls of the universe, they cannot develop relationship directly with the Lord, and that is why there is requirement of a bona fide spiritual master who can give them direction, the same direction which Paramatma gives externally. So the Lord, he is now enlightening Lord Brahma because of his penance, because of his devotional service, because of his constant prayers. And now Lord Brahma is empowered and he will be creating the universe as it was before by the mercy of the Lord. Text 27 and 28. Athabhipretam anvikshya brahmano madhusudanaha vishannaketasavjedena kalpa vyatikarambhasa lokasamsthana vidyana atmanam parichidyataha tamaha gadhaya vacha kashmalam shamayanniva athabhipretam anvikshya brahmano madhusudanaha vishannaketasavjedena kalpa vyatikarambhasa lokasamsthana vidyana atmana parichidyataha tamaha gadhaya vacha kashmalam shamayanniva. The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of the different planetary systems and was depressed upon seeing the evaporating water. He could understand the intention of Brahma. Thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusions that had arisen. Now you see. Athabhipretam anvikshya. Anvikshya means to see. So who saw? Madhusudana. Madhusudana means Krishna. So the Lord observed. Ath abhipretam. Abhipretam is intention or the consciousness of Lord Brahma. So the Lord, he saw the intention of Lord Brahma and what did he see? So he saw Vishanna Chetasam Tena Kalpa Vyatikarambhasa. So Lord Brahma, he saw the Supreme Lord, he saw Lord Brahma's intention of recreating the universe. And Lord Brahma, you see, Loka Samsthana Vijnana Atmana Parichidyataha. And Loka Samsthana means to re-establish or to recreate the universe. Lord Brahma was very anxious for that. And Vishanna Chetasamtena Kalpa Vyatikarambhasa. And Lord Brahma was very depressed, or he was he became anxious by seeing the devastating water of the universe. So the Lord Anvikshya,
Atha Abhipretam. The Lord he was conscious of Lord Brahma's anxiety. The Lord was conscious of Lord Brahma's anxiety, first of all, to recreate the universe, and second, because he was disturbed upon seeing the devastating water of the universe. So, after seeing all this, when the Lord witnessed this anxiety of Lord Brahma, tam aha gadhaya vacha. Tam means unto Lord Brahma. Aha. Aha means to speak. Agadhaya means Gadhaya means kiddish. Agadhaya means in very deep voice and in very deep words. The Lord started to instruct Lord Brahma. You see, so the Lord, he is conscious of every living entity within the universe. Just like we are conscious of our material body. Although we are present within the heart, the spirit soul is present within the heart in the body. Although we are present within the heart, but we are conscious of every cell and every part of the body. Similarly, the Lord, although he is present in his abode, Shvetadvipa, in the universe, but he is conscious of every living entity within the universe, including Lord Brahma. So the Lord was conscious of Lord Brahma's position. Whatever we think, whatever is our consciousness, the Lord is conscious of that. So the Lord was conscious that Lord Brahma is anxious to recreate the universe, but he is perturbed by seeing the devastating water of the universe. And because Lord Brahma is empowered for that purpose, so the Lord, by being pleased with Lord Brahma's prayers and devotional service, the Lord starts to instruct him in deep words. Right? So, because that is Lord Brahma's devotional service. In fact, we all must be very, very conscious of our devotional service to the Lord. It is the devotional service which is our eternal occupation. And Lord Brahma is very, very conscious of his devotional service to the Lord. When we start to take anxiety for our devotional service to Krishna, then we'll not have to take anxiety for ourselves, because that will be taken care of by Krishna. Krishna protects his devotees unlimitedly, provided the devotees engage in devotional service. When we engage in our devotional service, then it becomes Krishna's responsibility to protect us. When we say, Rakhe Krishna mare Krishna rakhe ke. If Krishna protects, no one can kill. And if Krishna kills, no one can protect. So, Rakhe Krishna mare ke is for whom? Is for devotees. Not that ordinary people can say this. No. Those who are non-devotees, this principle does not apply on them. This principle applies only on devotees. Why Krishna protects them? Because they are engaged in Krishna's service. Just like those who are government servants, those who are serving the government, all their expenses and all the facilities are given to them by the government, and the government protects them.
the ministers or big bureaucrats of the government, they get special security. Why? Because they are doing government's work. Similarly, those who are doing Krishna's work, only they are protected by the Lord. Ordinary people, they will be not protected by the Lord directly, but they will be protected or unprotected based on their requisite karmic reaction. But those who are pure devotees of Krishna, they are guaranteed protection by Krishna. Why? Because what is the meaning of pure devotee? Pure devotee means they are always anxious to serve Krishna. They are always anxious for Krishna's service. They are ready to give up everything for service of Krishna. That is the meaning of pure devotee. So Lord Brahma is anxious about Krishna's service. That is why Krishna is giving him transcendental direction and protection. So when we are anxious for Krishna's service, then we don't have to take anxiety for ourselves, because that will be taken care of by Krishna. A preacher of Krishna Katha is beyond the clutches of death. Why? Because Krishna takes charge of his life. If we want Krishna's magic in our life, we must be anxious towards service to Krishna. And what will be our service to Krishna? Service means what? Seva, devotional service. Many times people think devotional service means whatever I decide. No. What is the characteristic of devotional service? What is the characteristic of seva? When we say that we want to engage in the Lord's seva, we want to engage in devotional service to the Lord, what is the meaning of that? What do we mean by seva? Seva, we cannot decide. Seva is always given. Seva is always given. It's not that I can myself decide what is my seva to the Lord. No. Seva always flows from top to bottom. Seva is given to us by our authority. That is seva. If I start deciding what is my seva, then that is not seva. That is whimsical tendency. I decide what I want to do. That is whimsical. That is not seva. Seva means what is given by the spiritual master. That is seva. Like here, Lord Brahma, who is giving him seva? The Lord. Not that Lord Brahma himself has decided that I will serve the Lord like this. No. That is the meaning of seva. Seva cannot be whimsical. Seva is always given to us. So seva you cannot demand. Seva is always to be commanded and given. It is given to us by our authority. Right? So that is the meaning of devotional service. So those who are doing whimsical service, that does not please Krishna. You see, there are two important aspects of devotional service. We should always remember. All of you can make a note of it. There are two important aspects of devotional service or seva to the Lord. What is the first aspect? The first aspect is that I cannot decide what is my seva to the Lord. Seva is always given.
Seva is never taken. It is always given. That is the meaning of seva. That is the meaning of devotional service. Okay. So that is the first aspect. That seva is always given. Second, whenever you will do seva, you cannot expect pleasure for yourself. Of course, you will get mercy. We will get uh, mercy of the Lord. We will be protected by the Lord. All that is there. But when we are doing seva, it will be painful for us. Right? You cannot expect cozy, comfortable, easygoing seva. No. Seva means it will be painful. There will be some pain involved, some penance, some austerity involved. Mental austerity, physical austerity. I remember when I was little, so sometimes I would massage the feet of my father. So every day I would do that. So my father's feet were quite big and my hands were very small at that time. So I would not be able to do it properly. But yeah, I would try to do that. So my hands would pain. It's not that I would like it. I didn't like it. And my hands will start paining. But still I would do it. Why? Although it is painful for me, but still I am doing it. Why? Because it is giving pleasure to the master. Right? So, first aspect of seva is that it is never whimsical. It is always given to us. Second aspect of seva is that we should not focus on our pleasure when we are doing seva. Seva is meant for the pleasure of the master. Seva means service. And who does service? A servant. So a servant does service not for his or her pleasure. No. A servant engages in devotional service for the pleasure of the master. So these two things, these two are aspects of devotional service. We all must know these two things and we can make a note of it. Right? So Lord Brahma here, he has got this seva from the Lord directly. He has to accommodate all the different living entities in different parts of the universe, in different planetary systems. Only Lord Brahma can do this. No one else in the universe can even understand the task of Lord Brahma. Such is the position of Lord Brahma. That he has to, based on the quality and the modes of nature in which a living entity is, he has to accommodate places of the universe for these different species and living entities. And just by the grace of the Lord, Lord Brahma was able to execute such difficult task also. This task is not ordinary. To accommodate different living entities of the universe in different planetary systems is not easy. This task is not ordinary. All these different planets that we see, they are all different parts of the universe. Every planet is filled with living entities.
These people sometimes they try to go to upper planets or planetary systems, but that is not possible through our uh, tiny and useless space shuttles. Through these spacecrafts and space vehicles, we cannot go to upper planetary systems. Just like now they are trying to go to the moon through these space shuttles, but that is not possible. Between Earth and moon, there are many invisible planets. Rahu, Ketu. So they go to these invisible planets and they think that they have gone to the moon. And what do they find on the moon? Dust and desert. No. Chandraloka, moon is Chandralok. It is not desert. According to our Vedic scriptures, moon is not a desert. It's effulgent. Moon planet is effulgent planet. And there are very high grade of living entities who live there. So according to our Vedic version, they have never gone to the moon. Because if you go to the moon, there is description of what you will find there. Right? So if they have found desert and if they have found only dust and rocks, that means it is not moon. Okay. So moon planet is a part of heavenly planetary system and heavenly beings live there. And it is very beautiful, pristine, divine. So you don't find desert and rocks and dust there, right? So between moon and earth, there are many, many invisible planets. And you may go there and you may find rocks and dust, but you cannot go to, according to our Vedic scriptures, there is a subtle way of going to these planetary systems. Through gross means, we cannot go to these planetary systems. Only through subtle means. There is a subtle way of going there. So that is mentioned in our Vedic scripture that the yogis, great personalities in our universe, they in a very easily they go to these planetary systems. This interplanetary travel is possible, but only for those beings who are very, very exalted and they know subtle travel of space. So our belief is our Shastras. Our belief is our Vedic scriptures. Because to us, to human mind and intellect is limited by time and space and substance. Our Vedic scriptures are not limited by time, space, and substance. So Lord Brahma, here in this shloka, we see that he has got this responsibility given by the Lord. Only Lord Brahma can do this, to situate different living entities in different planets in the universe. So all these different planetary systems have different grades of living entities, and their existence in these different planetary systems is decided based on their modes of nature, and the quality of life is decided on that basis. Right? So human beings are very inferior living entities as compared to upper planetary systems. And these inferior living entities cannot access the higher planetary systems. They're trying to do that, but they cannot do that. It is beyond their domain. And even if they have been to these planetary systems, what is the use? After spending billions of rupees and dollars, they are bringing rocks and dust. What is the use? Better engage your time and energy in Krishna consciousness and go back to home, back to Godhead. Even if you go to moon planet, even there,
It's not that you will not die, right? Even there you have to undergo birth and death. So our goal should not be to go to moon and sun. No, the goal should be to go back to home, go back to Vaikuntha, go back to Golok Vrindavan, back to our home, back to Godhead. That is the goal of human life. So that's what we see here, Lord Brahma. His work is amazing because he is empowered by the Lord to do this work. And all this he is able to do by the mercy of Krishna, the Supreme Lord. So if you can like the video, comment, subscribe to our YouTube channel, try to share as much as possible. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा। सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम इस अध्याय में, ये जो 9वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान से अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं भगवान को। और उन्हें इस ब्रह्मांड को जैसा पहले था वैसा बनाना है। और उन्हें पता है, उसके लिए भगवान ने उन्हें
शक्ति भी दे रखी है, लेकिन उन्हें पता है कि बिना भगवान की कृपा के ये नहीं हो सकता, और इसीलिए वो अपनी दिव्य प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं, जो हमने इस अध्याय में अभी तक देखा। क्योंकि जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, और फिर वापस से जब ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का सृजन करना होता है, तो वो गतिविधि हम इस अध्याय में देख रहे हैं, और किस प्रकार ब्रह्मा जी लगातार अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे 26वें श्लोक से, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। Translation: The sage Maitreya said, "O Vidur, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus praying, he became silent as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration." अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो मैत्रेय मुनि, मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर से यहाँ पे कह रहे हैं, हे विदुर, अपने स्रोत का दर्शन करके जो स्वयं भगवान थे ब्रह्मा जी ने उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी प्रार्थना की, और इस तरह से वो शांत हो गए, जिस तरह एक मनुष्य तपस्या, ज्ञान और ध्यान के बाद शांत हो जाता है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। अब मैत्रेय ऋषि यहाँ पर महात्मा विदुर को बोल रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि ये जो संवाद चल रहा है, ये मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर के बीच में चल रहा है, जिसमें वो ब्रह्मा जी के बारे में इतिहास बता रहे हैं महात्मा विदुर को मैत्रेय ऋषि। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि स्वसंभवम, तो ब्रह्मा जी के जो स्रोत हैं वो स्वयं भगवान हैं, इसलिए यहाँ पर स्वसंभवम, संभवम मतलब जो उनके स्रोत हैं। निशाम एवं, तो जब ब्रह्मा जी ने अपने स्रोत को देखा, यानी स्वयं भगवान के जब दर्शन किए उन्होंने, तो तपो विद्या समाधि भी यावन मनोवचन स्तुत्वा, तो जितनी वो अपने मन अपने वचन से जो स्तुति कर सकते थे भगवान की, जितनी प्रार्थना कर सकते थे वो की उन्होंने। ठीक है, यावन मनोवचन स्तुत्वा मतलब अपने मन और अपने वचनों से उन्होंने स्तुति की भगवान की, भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। तपस्या, ज्ञान, समाधि, ये सब उन्होंने भगवान को तुष्ट करने के लिए किया, और फिर विराम सखिन्नवत, और फिर वो शांत हो गए। तो अब ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा शक्त्यावेशित है, मतलब उन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त है। इस सृष्टि को जैसी सृष्टि
विशेष शक्ति भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त है। और सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, जितने भी जीव इस सृष्टि में हैं, उन सब के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। और सभी जीवों को भगवान दिशा निर्देश भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर। जिस प्रकार हम अपने शरीर में हृदय में उपस्थित हैं जीवात्मा, लेकिन हमारी चेतना शरीर के हर अंग में है, उसी प्रकार भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु अपने धाम में रहते हैं, श्वेत द्वीप में, लेकिन उनकी चेतना जो है वो हर जीव में स्थित है, और इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो वो सभी जीवों को दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु को चैत्य गुरु भी कहते हैं। एक तो गुरु वो होते हैं जो हमें बाह्य यानी एक्सटर्नल, हमें जिनसे दिशा निर्देश लेना पड़ता है, जो हमारे सतगुरु जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे हम दिशा लेते हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की जो दिशा निर्देश है, जो मार्गदर्शन है, वो सीधा चैत्य गुरु से हो रही है। चैत्य गुरु मतलब क्षीरोदाक्षाई विष्णु जो परमात्मा है। तो हम सबके हृदय में भी चैत्य गुरु परमात्मा क्षीरोदाक्षाई विष्णु उपस्थित है, लेकिन अभी हमारा उनसे संपर्क स्थापित नहीं है। जो संपर्क है वो नहीं है चैत्य गुरु से। तो जब हम तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब उनकी भक्ति करते हैं, तब हम उस लायक बनते हैं कि हम भगवान से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। लेकिन जड़ अवस्था में वो संभव नहीं होता, और इसीलिए जब हम वो दिशा निर्देश नहीं मिल पाता हमें, तो वही चैत्य गुरु बाहर हमारे गुरु के रूप में हमें दिशा देते हैं। तो परमात्मा का जो मार्गदर्शन है और गुरु का मार्गदर्शन, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही है। गुरु के शब्द और परमात्मा के शब्द दोनों एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो ब्रह्मा जी उन्हें उनके जो गुरु हैं वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, और इसलिए उन्हें दिशा में जो उनका मार्गदर्शन हो रहा है, उन्हें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, वो सीधा भगवान विष्णु यानी क्षीरोदाक्षाई विष्णु से मिल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए हैं, स्वयं उनके पुत्र हैं, और इसीलिए ब्रह्मा जी को सीधा जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन है वो स्वयं भगवान से मिल रहा है। तो ये ब्रह्मा जी का
पद है, उनका उनका पोजीशन है जो बहुत ही अद्भुत है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी ने जब अपनी प्रार्थनाएं की, जब अपने दिव्य स्तुति उन्होंने अर्पित किए भगवान को, तो भगवान उनसे प्रसन्न होकर अब उन्हें जो हृदय में जो दिशा निर्देश है वो देने जा रहे हैं। और इस दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के बाद ब्रह्मा जी इस सृष्टि को वापस से जैसा था वैसा बनाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता है कि वो बिना भगवान की कृपा के ये नहीं कर सकते। भले ही वो स्वयं ब्रह्मा है, लेकिन उन्हें भी भगवान की कृपा, उन्हें पता है कि बिना भगवान की कृपा के वो कुछ नहीं कर सकते। और ये जब ब्रह्मा जी के साथ है तो फिर सारे जीवों का भी ये दायित्व है कि वो भी ब्रह्मा जी की तरह भक्ति करे, सेवा करे भगवान की, क्योंकि उसके बिना, उसके वो किए बिना इस सृष्टि में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी एक तरीके से हम सब का मार्गदर्शन करते हुए यहाँ पर अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं। 27वां 28वां श्लोक। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्प कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः। तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यत। तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। Translation. The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of the different planetary systems and was depressed upon seeing the devastating water. He could understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusion that had arisen. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत ही चिंतित हैं इस ब्रह्मांड को वापस से बनाने के लिए, और गर्भोदक जल को देखकर वो काफी चिंतित थे। और उन्हें ब्रह्मा जी की चेतना का पता था, और इसलिए अब वो उनका सारा भ्रम दूर करने के लिए बहुत ही गहरे शब्दों में बोलना प्रारंभ करने वाले हैं। अब आप देखिए, तो मैत्रेय ऋषि अब यहाँ पर कह रहे हैं, अथ अभिप्रेतम अन्वीक्ष। अन्वीक्ष का मतलब देखना। तो भगवान ने ये देखा कि ब्रह्मा जी जो हैं, उनकी चेतना, उनका जो वो क्या करना चाहते हैं इसको भगवान जानते थे। ब्रह्मणो मधुसूदन। मधुसूदन मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। तो भगवान विष्णु को पता था कि ब्रह्मा जी के मन में क्या है, ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं। विषण्ण चेतसं तेन कल्प व्यतिकराम, और वो देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी
आम्भसा यानी जो ये अ, ब्रह्मांड का जो जल है उसके स्तर को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित थे, और ये भगवान समझ पा रहे थे, भगवान को ये पता था। लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, लोक संस्थान यानी इस ब्रह्मांड को वापस से जैसा था वैसा बनाने के लिए और जीव जंतुओं को उनके ग्रहों में पहुंचाने के लिए ब्रह्मा जी चिंतित थे। तम आह गाधया वाचा, तम आह तब भगवान ने, तम मतलब ब्रह्मा जी को, आह आह मतलब बोलना, बोलना प्रारंभ किया या बोला। गाधया अवगाधया वाचा, अगाधया मतलब बहुत ही गहरे शब्दों में अब भगवान कशमलम शमयन्निव, ब्रह्मा जी के सारे संशय को दूर करते हुए अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप देखिए, तो भगवान हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, और भगवान को सब पता है हमारे मन में क्या चल रहा है। यहां तक कि यहाँ पर ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान को पता है, कि ब्रह्मा जी चिंतित हैं इस ब्रह्मांड को लेकर, किस प्रकार इस ब्रह्मांड को जैसा था वैसा बनाएं, क्योंकि ये उन्हें सेवा मिली है भगवान के द्वारा, ये भगवान के द्वारा दी हुई सेवा है उनको। तो हिद्यता का मतलब बहुत चिंतित है ब्रह्मा जी, और ये चिंता बहुत अच्छी है यदि वो भगवान की सेवा को लेकर हमें है। जब हम भगवान के लिए चिंता करने लगते हैं तो हमें अपने लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। भगवान की सेवा के लिए चिंता करना गलत नहीं। हम कई बार कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्णा ने सोच लिया रक्षा करना है तो कोई मार नहीं सकता, और कृष्णा ने सोच लिया मारना है तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो ये जो हम बोलते हैं ये किसके लिए है? ये शुद्ध भक्तों के लिए है। राखे कृष्ण मारे के मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ये उनके लिए है। जब हम भगवान की सेवा के लिए कष्ट उठाते हैं तो हमें अपने लिए सोचना नहीं पड़ता, तो हमारी चिंता भगवान करते हैं। जब हम भगवान की सेवा की चिंता करते हैं तो हमारी चिंता फिर भगवान करते हैं। जैसे जो सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, आईएएस होते हैं या जो बड़े पद पे होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, आप देखिए उनको कितनी सिक्योरिटी देती है सरकार, उनको कितना, कितने सारे सैनिक उनके आसपास रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार का काम कर रहे हैं। तो जब हम भगवान का काम करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर भगवान का दायित्व है हमारी सुरक्षा करना। तो ये जो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के है, ये अभक्तों के लिए नहीं है, ये भक्त के लिए है। जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, उनको तो भगवान की क्या सुरक्षा, वो तो अपने कर्मों के अनुसार जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा। उनकी सुरक्षा या उनका विनाश ये तो प्रकृति के नियम तय करती। लेकिन जो प्रकृति को छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है,
जो भगवान के लिए चिंता करता है उसे अपने लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी चिंता फिर भगवान करते हैं। तो सेवा, ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अब ये सेवा का मतलब क्या होता है भाई? जब हम सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि सेवा हम नहीं तय कर सकते। यहाँ पर ब्रह्मा जी को जो सेवा मिली है, ये किसने दी है? भगवान ने दी है। यदि हम तय करने लगे कि सेवा क्या है मेरी, फिर वो सेवा नहीं है। सेवा हमेशा दी जाती है, आप ले नहीं सकते सेवा। किसी भी सेवा के दो, जब भी सेवा हम करते भगवान की तो उसके दो अंग है। पहला अंग कि सेवा हम ले नहीं सकते, सेवा हमेशा दी जाती। भगवान की सेवा हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, हमारे गुरु हमको सेवा देते हैं, वो सेवा है। स्वयं से हम तय करने की हम क्या सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा नहीं है। वो तो हमारे मन का वहम है, वो तो एक तरीके से अहंकार है। मैं तय करूंगा, मुझे से ये सेवा करनी, ये तो अहंकार है। मतलब मैं तय कर रहा हूं। भगवान को कैसे तुष्ट करना है वो भगवान तय करेंगे कि हम तय करेंगे? भगवान को कैसे खुश करना है ये तो भगवान को पता है ना। तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि हमको क्या सेवा करना है? तो सेवा हमेशा दी जाती है, ली नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो पहला अंग है सेवा का। दूसरा दूसरा ये है कि जब भी हम सेवा करेंगे तो हमें उसमें आनंद हो सकता है न आए। मुख्यतः वो हमें आनंद नहीं देगा। जैसे जब मैं मुझे याद है, जब हम बचपन में हम अपने पिताजी के चरण दबाते थे। अब उनके चरण तो बड़े बड़े थे और हमारे हाथ छोटे छोटे, तो उसमें हमें तो तकलीफ होती थी, हमें दर्द होता था, लेकिन फिर भी हम करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके आनंद के लिए था। मुझे आनंद नहीं आएगा, मुझे पता था। जब हम सेवा करते हैं तो हमें आनंद नहीं आएगा। हमें आनंद आने लगा तो वो सेवा नहीं है, वो मेवा है। ठीक है, सेवा करते हैं तो भगवान हमें मेवा देते हैं, वो एक अलग चीज। लेकिन जब भी हम सेवा करेंगे तो उसमें हमें तकलीफ होगी। तपस्या, हम अपने आनंद के लिए सेवा नहीं करते हैं, हम भगवान के आनंद के लिए सेवा करते हैं। तो ये दो अंग है सेवा की। पहली कि हम तय नहीं कर सकते कि सेवा क्या होगी, हमारे गुरु हमें सेवा देते हैं। दूसरा कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें तो दुख ही होगा, हमें तो कष्ट ही होगा, लेकिन भगवान को आनंद होगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान से स्वयं उन्हें सेवा मिली और वो कितने चिंतित हैं भगवान अपनी सेवा के लिए। और उनकी सेवा कोई साधारण नहीं है। उन्हें यह तय करना है कि कौन से जीव किस ग्रह, किस लोक में उनको स्थापित करना है। अलग अलग जीवों को अलग अलग लोकों में स्थापित करना, यह ब्रह्मा जी की सेवा है। ये सिर्फ ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। साधारण मनुष्य तो इसको समझ और सोच भी नहीं सकते। आजकल तो ये जो अलग अलग ग्रह बने हुए हैं, जो ब्रह्मा जी जहां पे स्थापित करना है जीवों को, ये सब लोग अलग अलग तरह के जीवों के लिए हैं। सभी ग्रह पे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे ग्रहों पे चले जाएं, चांद पे, चंद्रमा पे चले जाएं, और ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं लोग, लेकिन वो संभव नहीं है। आप नहीं जा सकते। हम अपने वायुयानों में और
अंतरिक्ष विमानों में हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जीवों के लिए बने हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो जा चुके हैं, हम तो चले गए चंद्रमा पे। नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बहुत सारे अदृश्य ग्रह हैं। राहु, केतु, ये सारे अलग अलग अदृश्य ग्रह, ये दिखते नहीं है, ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में है। हम वहां पे प्रवेश कर जाते हैं और हमको लगता है हम चंद्रमा पे चले गए। चंद्रमा पे नहीं जा सकते। चंद्रमा का विवरण है हमारे शास्त्रों में कि जो चंद्रमा है वो चंद्रलोक है, स्वर्ग लोक का एक भाग है, और वहां पे जो जीव रहते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो यदि हमको किसी ग्रह पे जाके कोई जीव नहीं मिला और वहां पे हमको रेगिस्तान और मिट्टी पत्थर मिल रहा है, तो वो चंद्रमा नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा तो बहुत ही दिव्य ग्रह है, बहुत ही सुंदर है, पृथ्वी से करोड़ों गुना अधिक सुंदर है, और वहां के जीव जो हैं वो भी पृथ्वी से कहीं 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 अधिक सुंदर है। तो यदि वहां पे खाली आपको रेगिस्तान और मिट्टी पत्थर मिल रहा है तो वो चंद्रमा नहीं हो सकता। हमारा जो प्रमाण है वो हमारे शास्त्र है, मनुष्यों पे हम नहीं मानते। मनुष्य मनुष्य तो हमें पता ही है, मनुष्यों में बहुत कमियां होती हैं। मनुष्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, जिसके कारण मनुष्य कुछ भी करना चाहता है। लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि एक देश दूसरे देश को छल करना चाहता है। बहुत सारी चीजें, मनुष्यों में बहुत कमियां होती हैं। तो अब मनुष्यों पे हमारा विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास हमारे शास्त्रों पे है। तो शास्त्र के अनुसार आप नहीं जा सकते, इस शरीर में नहीं जा सकते। वहां जाने का दूसरा मार्ग है, दूसरा तरीका है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म तरीका है, जो योगी लोग अपनाते हैं। हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, गंगा माता के माध्यम से आप वहां जा सकते हैं सूक्ष्म मार्ग से। ये जो स्थूल मार्ग है, जड़ मार्ग है, अपने वायुयानों में और विमानों में नहीं जा सकते, वो पॉसिबल नहीं। तो हम मनुष्यों पे हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि एक तो कलयुग के मनुष्य हैं, ठीक है। हमारा विश्वास हमारे शास्त्रों पे है। तो भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पर, भगवान के द्वारा उन्हें ये सेवा मिली है और बहुत चिंतित हैं, और अलग अलग जो लोग हैं वहां पे, वहां के गुणों के अनुसार अलग अलग जीवों को वहां पे प्रतिस्थापित करना है। ब्रह्मा जी को ये सेवा भगवान के द्वारा मिली है और वो अपनी सेवा को लेकर बहुत चिंतित हैं। और सेवा को लेकर चिंता होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को यह भी पता है कि बिना भगवान की कृपा के ये नहीं हो सकता। तो ये जो उनकी सेवा है, ये बहुत ही अद्भुत सेवा है। लेकिन ये अद्भुत सेवा, इतनी विशिष्ट जो सेवा है, वो क्यों कर पा रहे हैं ब्रह्मा जी? क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है। और क्यों की कृपा प्राप्त है? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और लगातार उन्हें पता है कि वो नहीं कर रहे, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ब्रह्मा जी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जब वो ब्रह्मा जी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधारण मनुष्य को भी यही मार्गदर्शन ब्रह्मा जी दे रहे हैं कि हम सबको भी भगवान पर निर्भर होना है, उन पर आश्रित होना है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ये चंद्रमा वंद्रमा पे जाना, क्या मिलेगा वहां जाके? भाई ऐसा थोड़ी कि वहां जाके हम मृत्यु नहीं होगी, मरना तो वहां भी है। तो ये इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वहां जाना और मिट्टी पत्थर लेके आना, उससे अच्छा है हम वो समय और धन जो है वो भगवान के नाम में लगाएं, भगवान के लिए लगाएं।
ताकि हम इस शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम वापस चले जाएं। वो लक्ष्य होना चाहिए। क्या मिलेगा ये सब व्यर्थ में पैसा बहा के, लक्ष्मी का दुरुपयोग करके? लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा के लिए होना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये पता है और वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, आज ही अपने सत्र को विराम देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।